किसी ने स्टडी की और रिसर्च की है इन टॉपिक्स के ऊपर, एंड इफ यू गाइस वांट टू शेयर, सो यू कैन डू इट. टास्क एनालिसिस जो होता है, इट्स लाइक ब्रेकिंग डाउन स्टेप्स. यू बेसिकली मेक अ लिस्ट, यू टेक नोट्स. उसमें एक पॉजिटिव और नेगेटिव भी होता है, हम्म. जहाँ तक मैंने रिसर्च की है. एंड इट इज डन थ्रू फॉरवर्ड चेनिंग, total task training and backward task training. And it is like a series of ordered steps. So you basically observe the client how much they know, और फिर आप उसमें उनको या तो सिखाते हैं and reinforce करते हैं along the way. Backward में you reinforce the last step. In total task training, you reinforce the after the client has done the entire thing independently. एंड जो फॉरवर्ड चेनिंग है, उसमें आप फर्स्ट टास्क जो होता है, जो वो खुद से करते हैं, उसको रिवॉर्ड करते हैं. ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड. सो बेसिकली आपने एक्सप्लेन कर दिया है चेनिंग प्रोसीजर्स को भी और टास्क एनालिसिस को भी कि व्हाट इज एक्चुअली टास्क एनालिसिस. तो जब भी हमने कोई भी कॉन्सेप्ट सिखाना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक द टास्क एनालिसिस. सो टास्क एनालिसिस इज टू ऑब्जर्व or imagine, or you ask someone and you observe the how he is doing it, what steps are included to complete the task. So आप टास्क एनालिसिस करने के डिफरेंट मेथड्स हैं. जैसे मैंने बताया कि ऑब्जर्व करके भी किसी एक्सपर्ट को, आप किसी एक्सपर्ट को कह दो, रिक्वेस्ट करो कि आप प्लीज टूथब्रश करके दिखाओ कि हाउ वी डू इट एंड व्हाट स्टेप्स आर इंक्लूडेड इन टूथब्रशिंग. So when he do the toothbrushing, and you note down all the steps. Like for example, you make the 10 steps of toothbrushing. और या फिर आप इमेजिन करके भी टास्क बना सकते हो, टास्क एनालिसिस स्टेप्स लिख सकते हो इमेजिन करके कि यू आर इमेजिनिंग दैट यू आर ब्रशिंग द टीथ. ओके, फर्स्ट स्टेप इज टू pick up the toothbrush, and the second step is to pick up the toothpaste, and the third step is to paste the toothpaste on the toothbrush, and the fourth step is to brush the teeth, and then rinse them out, and then closing the tap and washing the brush and closing the tap and then putting the brush and toothpaste back. Okay, so you note down all 10 steps, and this is called the task analysis. Okay, so the rationale for chaining is we teach the complex skills that allow individuals to function more independently, like a way to add new behaviors to an existing behavioral repertoire, and can easily be combined with other procedures, prompting, instructions, and reinforcement. Okay, so task analysis is a procedure जिसमें हम टास्क को ब्रेक डाउन करते हैं थ्रू डिफरेंट मेथड्स, ऑब्जर्वेशन मेथड, और आप इमेजिन करके भी आप टास्क लिख सकते हो, उसके स्टेप्स लिख सकते हैं. लेकिन टास्क एनालिसिस बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट 4 पॉइंट्स हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, यू हैव टू लुक एट द एज ऑफ द चाइल्ड. लाइक नोबडी नोज हाउ मेनी स्टेप्स नीड टू बी नोट डाउन, और कितने स्टेप्स होने चाहिए, कितने किस बच्चा किस लेवल का है. यू हैव टू लुक एट द लेवल ऑफ द चाइल्ड, स्किल लेवल ऑफ द चाइल्ड. जो स्टेप्स बनेंगे वो डिपेंड कर रहे हैं बच्चे के स्किल लेवल के ऊपर भी, एज के ऊपर भी, डिसेबिलिटी के ऊपर भी, और प्रायर एक्सपीरियंस के ऊपर भी. एज के ऊपर कैसे? फॉर एग्जाम्पल, इफ द चाइल्ड एज इज 10 years, and how many steps you will make for the toothbrushing? You can make like 5 steps, 6 steps, or 7 steps, not more than that, because the child is big, he is 10 years old, and you just have to teach that 10 years old child, um, like no more, like not in so much detail. Okay, so निस्बतन उस बच्चे के जिसकी एज 2 years है और 3 years है और 4 years है. Like for example, एक side पे अगर 3 years old child है and the other side is the 10 years old child, so you will make more step for the 4 years old child
and you will make less steps for the 10 years old child, because 10 years old child के बच्चे की अंडरस्टैंडिंग लेवल डिफरेंट होगा 4 years के बच्चे की निस्बतन, ठीक है। सो और अगर स्किल लेवल का भी बात की जाए, लाइक इफ द चाइल्ड इज हाई फंक्शनिंग, he learns very quickly, his observation skills are very good, his attention span is very good, attending skills are very good. So we can make less steps. If his skill level is high, oh sorry, low, then you have to make more steps. Skill level is like the functional level of the child. Okay, his learning abilities. Okay, so the disability, if the child is with the severe autism or any severe kind of neurological conditions, so you will make more steps for that child rather than a child with minimal disabilities like little bit or in the severity, like minimal autism or something like that. So you will make the less steps, very 5 steps, 6 steps, or 7 steps, not more than that. So if the child's prior experience is high, like for example, he has been brushing teeth at home for 3 to 4 months with little bit help, so you will make less step, like you will not make more than 5 to 6 steps, right? So if the prior experience is very low, like he never ever brushes teeth in his life, so you will make more steps because he does not have experience. आपके पास बच्चे के एक्सपीरियंस नहीं है, कभी इसने इतना ब्रशिंग नहीं की, तो इसके लिए ज्यादा स्टेप्स बनाने पड़ेंगे। ज्यादा स्टेप्स मीन के इजी, we are making things easy for the child to understand. Okay, so less steps means कम स्टेप्स का मतलब है कि आप थोड़ा बहुत टास्क को कॉम्प्लेक्स रख रहे हो, बच्चे की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है इसलिए कॉम्प्लेक्स रख रहे हो। ये 4 पॉइंट्स ऐसे हैं, 4 पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको आपने जहन में रखने हैं ड्यूरिंग यू आर कंस्ट्रक्टिंग अ टास्क एनालिसिस फॉर एनी चाइल्ड। ओके, सो आपने टास्क एनालिसिस बना लिया। अब टास्क एनालिसिस बनाने के बाद आपने असेस करना है बच्चे के मास्टरी लेवल को। मास्टरी लेवल क्या है, आप बेसलाइन लेते हो। सो हाउ मेनी स्टेप्स द चाइल्ड ऑलरेडी नोज, might be he knows more than 3 steps out of 10 steps. So might be you must know about it, right? So you take the baseline. It is also called the assessing the mastery level. So there are two methods to do the baseline. The first method is to use the single opportunity method. In the single opportunity method, how you are recording the data. So you ask the child to brush your teeth, and then you just, if the child follows the steps mentioned on the list, you make the plus in front of him, in front of the step. So if the child is unable to perform that step, you make the minus sign just to record the data. That plus means he can do it, minus means he cannot do it. So you start with the first step. You said brush your teeth. Did he follow the first step? Okay, he followed the first step, plus. Okay, did he follow the second step? He did not follow the second step, minus. And all the rest of the steps will be minus automatically. You don't need to check the further steps. Okay, so you just close your assessment and you just say, okay, let's start working. So he only knows the first step, the rest of the steps he does not know. How? Why? In the single opportunity method, we save the time. We just like consider that if there is error in any step, the rest of the steps are also will be considered negative. That we will consider it the child does not know these steps. Okay, so this is called the single opportunity method, in which we just make the minus on rest of the steps if there is any error on any steps. So there is a second method which is called the multiple opportunity method. This is also the second method of taking baseline or assessing the mastery level. So in the multiple opportunity method, as its name, we give multiple opportunities to the child to complete the tasks. We say brush your teeth, and the data recording method is the same. You will put plus if the trial is plus positive, you make the plus, or minus shows that he does not know this step. Okay,
So, like for example, the child follows the first three steps, but he did mistake on the fourth step, or he did not follow the fourth step. He just jumped on the fifth step, or he does not know it. सो आप क्या कहते हो, आप वहां पे प्रॉम्प्ट देते हो बच्चे को, या आप खुद बच्चे के लिए वो टास्क, वो स्टेप जो है वो परफॉर्म कर देते हो, और फिर आप फिफ्थ स्टेप भी चेक करते हो कि उसको आता है, सिक्स भी चेक करते हो, अगर सिक्स पे एरर आ गए तो यू विल डू इट फॉर द चाइल्ड एंड यू विल असेस द सेवंथ एंड एट्थ एंड नाइन्थ स्टेप. So here you are ignoring the mistakes and errors on the step levels. Okay. So you let the child complete the tasks by himself with help. Wherever he needs help, you need to do it. So, but if you see that is there if there is any error on any step level, so you just put it minus there. You say that he does not know the third step, fifth step, eighth step, and ninth and tenth step. Okay, so rest of the steps are positives. Okay, so then you teach only those steps which the child did error. So जिस पे error बच्चे ने किया था वो just आप उसको वो सिखाते हो, और पॉजिटिव स्टेप्स वैसे ही रहते हैं. तो ये था असेसमेंट करने का एक तरीका, बेसलाइन लेने का एक तरीका टास्क एनालिसिस के बाद. पहला स्टेप टास्क एनालिसिस, सेकंड baseline, and third जो phase है in that you use the chaining procedures. So chaining procedures are like forward chaining, backward chaining, and total task training. In the forward chaining, who is going to explain the forward chaining? Sir, can I? Gulzeb, I think so. You have explained. Did you? No, sir. Okay, you did not. No, sir. You please explain it. सर फॉरवर्ड चेनिंग में ये होता है कि हम बच्चे को स्टेप वन से जो है बच्चे पूरा जितने भी स्टेप्स होते हैं उसमें स्टेप बाय स्टेप बच्चे को सिखाते हैं, स्टेप वन फिर स्टेप टू फिर स्टेप थ्री. ठीक. बैकवर्ड चेनिंग में ये होता है हम सारे स्टेप्स Just only सिखा दे. forward chaining अभी डिस्कस करेंगे हम. ओके सर. Thank you for explaining the forward chaining. In a more clear way, अगर हम बात करें forward chaining में, if the therapist made the 10 steps to teach a child a single skill, so you will start teaching the first step first. Okay, so you are teaching the first step. For example, whenever you say brush your teeth, child don't know what you said. Okay, so बच्चे को नहीं पता, बिकॉज ऑटिज्म के बच्चों को इंस्ट्रक्शन समझ नहीं आती सही तरीके से, वो प्रोसेस नहीं कर पाते, रिस्पॉन्स जनरेट नहीं कर पाते. सो यू आर ओनली टीचिंग हिम टू पिक अप द toothbrush and toothpaste. This is the first step, right? So your focus is to teach the first step first. So when he will pick up the brush and the toothpaste, and you therapist will perform the rest of the steps for the child. Therapist will complete that step, though all the rest of the steps. Okay, so our focus should be to teach the only the first step. When he will learn the first step, we will focus on to teach him the second step. Okay, like for example, he has learned the first step, and you ask brush your teeth, and the child picked up the toothbrush and toothpaste, and you are prompting him on the second step, which is opening the toothpaste. Okay, you are prompting him to teach the open toothpaste, and then on the third step, fourth, fifth, sixth, and seven, and eight, and nine, and 10 steps, therapist will do it for with the child. Okay, so your focus is to teach the second step. Once the child has learned the second step, you will ask him, like for example, brush your teeth, and you let the child perform the first and the second step, and on the third step you will prompt him, you will focus on to teach him the third step. So once he has learned the third step, even though it takes 1 week or 3 days, 4 days, it does not matter. You have to teach him only that step. Like we are targeting. Okay, so like third step is a target, so you teach the third step, even though it's take 1 week. So rest of the steps, therapist will do it for the child with the child. So if the third step is learned, you will let the child perform the first, second, and third step, and you will prompt the fourth step. Okay, so this is how we do the forward chaining. We are adding one step gradually. Okay, we are teaching the first, then second, third, fourth, fifth step, and then 10th step. So once all these 10 steps are learned, the child is
able to independently able to brush the teeth. Okay, so this is how we do the forward chaining. And the backward chaining says you teach the last step first. Okay, like for example, if you made the 10 steps, okay, let's say let's do the activity. I'm just opening my Word app. Just a second. I'm writing the 10 steps here. Okay, what are the steps included to teach a child to brush the teeth? Okay, toothbrushing. First step is to pick up toothbrush and toothpaste. Pick up toothbrush and toothpaste. And the second step is to um, open the toothpaste. Third step is to paste it on brush. And fourth step is to brush teeth. And the fifth is to rinse it mouth. And the sixth step is to close the tap. And the seventh step is to wash the toothbrush. And the open the tap, sorry, in the mouth, brush teeth. Fifth is to open tap, rinse the mouth, and then seventh is the wash the toothbrush, and then put the toothbrush, close the tap. Tap ninth is to put the toothbrush and toothpaste back. Okay. So these are the 9 steps to brush the teeth. Okay. So if we are following the backward chaining, if we are doing the backward chaining says, so you teach the first step first, last step first. The last step is to put the toothbrush and toothpaste back. So how we are going to teach this step? Okay, so this is the first step. Put the toothbrush and toothpaste on the rack or on the shelf anywhere. So you are teaching the 9th step first. So how you will do it? You will ask the child to brush teeth, and when you ask the child to brush teeth, you will pick up the toothbrush and toothpaste. The therapist will open that toothpaste. He will paste it on the brush. He will brush the teeth of the child, and he will open the tap. He will help the child to rinse a mouth. He will help the child to wash the toothbrush, and he will close the tap. And when the therapist will complete all first 8 steps, therapist will prompt the 9th step to be done. Okay, so here all these steps the therapist is not
prompting the child. He is not teaching the child. He is just helping the child to complete this step. He is doing it for the child. The therapist is performing all these steps for the child. Okay. But he prompted the ninth step. He asked the child to put the toothbrush and toothpaste back. So once the ninth step is learned, so the therapist will teach the eighth step. First, the therapist will say, brush your teeth. And after asking him to brush the teeth, the therapist will pick up the toothpaste and toothbrush. He will open the toothpaste. He will brush the teeth and all steps. When the all seven steps are done, he will prompt the eighth step. If the eighth step is learned, the therapist will focus to teach the seventh step. Okay. So the therapist will perform all these steps for the child and he will prompt the seventh step. When the child learned the seventh step, the therapist will focus to teach him the sixth step, rinse mouth. Okay, he will prompt the rinse mouth step. Then he will teach the fifth step, which is open tap. Then he will teach the brushing teeth steps. Then he will focus to learn paste it on the brush. Okay, so this is how the therapist is teaching him one by one. So once all these steps are learned, so the child has learned to brush the teeth. The child has reached to the level where he can brush his teeth independently. Okay, so this is how we teach through the chaining procedures. So this is called the backward chaining. So how we will do the forward chaining? Forward chaining, you are starting from the first step. Then rest of the steps you will teach to prompt. Okay, so this is how you do the forward chaining. Then fourth step, you will teach the child. Then fifth step, then 7, 6, 8, 9, 10. Then at the end, the child has learned all the 9 steps and he is able to do the toothbrushing. And in the total task training, if we talk about the total task training, it says you are teaching all the step at once. You are prompting on the step 1, you are prompting on the step 2, you are prompting the step 3, you are prompting the step 4, you are prompting the step 5, 6, 7, and you prompt each and every step included in the task analysis. And you are praising on every step. Like for example, when you are prompting the first step, you say, good job, we are done, we did it. We did the first step. And then you prompted the second step, good job, we finished the second step now. It's time to third step. It's time to perform the third step. Once you're done with the third, good job, we did it. So on the fourth, good job, we did the fourth step, fifth, 7, 8, 9, 10. So this is how you do the total task training. You are teaching the whole task at once. You did the task analysis, but you are teaching all the steps of the task at once. You are prompting every step and you are reinforcing every step. Okay, got it? Is it clear? Any question? No, sir. Good job, very nice. So कोई किसी का क्वेश्चन है तो अभी पूछ ले. अगर किसी को समझ नहीं आया और इसकी एक असाइनमेंट है जो आप लोगों ने करनी है, इसकी आपने एक वीडियो रिकॉर्ड करनी है, एवरीबडी. सो नोबडी शुड मिस दिस असाइनमेंट. सो हर एक स्टूडेंट मुझे वीडियोस भेजेगा टोटल टास्क ट्रेनिंग की, बैकवर्ड ट्रेनिंग की, फॉरवर्ड ट्रेनिंग की. एक एक वीडियो बना के सब ने मुझे भेजनी है विद इन 3 days. So today is Sunday. You will have time till Wednesday. So on Wednesday, I want all the videos from everyone. So एक वीडियो बैकवर्ड ट्रेनिंग की, एक फॉरवर्ड ट्रेनिंग की और एक टोटल टास्क ट्रेनिंग की. ठीक है?
जरूरी नहीं है आपके पास बच्चे होने चाहिए, क्लाइंट्स हो, नहीं स्पेशल बच्चों की जरूरत नहीं है। You can ask your brother, you can ask your sister, you can ask your husband, wife, anybody to help you, and to you just hypothesize that person as a child, and you just pretending to teach that person that skill you targeted, ठीक है। और उसकी वीडियो रिकॉर्ड करके आप लोगों ने भेजनी है वेंसडे तक। और जरूरी नहीं है इसमें आप भी आए, जस्ट आपका जो जिसको आप प्रेटेंड कर रहे हो, बच्चा या चाइल्ड या क्लाइंट, आप जस्ट उसको वीडियो में ले लो। आपके अगर हाथ वगैरह आते हैं तो दैट्स फाइन, आपको पूरा आने की जरूरत नहीं है वीडियो में। जस्ट उस बच्चे को मैंने देखना है आप कैसे करवा रहे हो, प्रोसीजर क्लियर होना चाहिए। हफ्सा अजहर आपके लिए पॉसिबल नहीं है, अच्छा। चलें, आपके लिए मैं कुछ और फिर ढूंढ लेता हूँ कोई और मेथड। लेकिन जो वीडियोस बना सकते हैं वो मस्ट वीडियो बना के मुझे वेंसडे तक भेज दें, ठीक है। आपने मिस सर। हफ्सा जो वीडियो नहीं बना सकते, हफ्सा जैसे इन्होंने कहा कि मैं वीडियो नहीं बना सकती, तो आपने मुझे टूथ ब्रशिंग के ऊपर, आपने मुझे क्लोथिंग के ऊपर, आपने मुझे शू लेसिंग के ऊपर, और आपने मुझे कॉन्टेक्ट नंबर याद करवाने के ऊपर, आपने मुझे हाउस एड्रेस लर्न करवाने के ऊपर, और आपने मुझे एक और स्टेप है शर्ट वेयरिंग का, मैंने आपको बता दिया, हेयर ब्रश करवाने पे। ये सब चीजों के ऊपर आपने मुझे वीडियो वीडियो नहीं सॉरी, आपने मुझे टाइप करके भेजना है। इन सब टास्क एनालिसिस आपने बनाना है। इन सब टास्क को बैकवर्ड चेनिंग में कैसे सिखाएंगे, आपने पूरा प्रोसीजर लिखना है, ठीक है। सो ये सारी चीजें आपने करके मुझे भेजनी है वेंसडे तक, ठीक है। इसमें ऑलमोस्ट तकरीबन 8 स्किल ऐसे होने चाहिए जो आप सिखा रही हो, और आपने पूरा प्रोसीजर उसमें लिखना है। उसमें टास्क एनालिसिस भी होना चाहिए, और उसमें जो है प्रोसीजर भी लिखा होना चाहिए, ठीक है। गॉट इट हेलो, हफ्स। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर माय नेम इज बेला नाज से, आज ही मेरा इनरोल हुआ है, तो अभी मैं आई हूँ, तो मुझे कुछ बहुत समझ नहीं आ रही क्या, तो आप थोड़ा बहुत स्टार्ट से समझा सकते हैं थोड़ा बहुत। Sabila, I will guide you later on. Okay, I will send you the text. ओके। I will send you the voice message. ओके, थैंक Okay, यू सर। no ओके। problem. Yes, हफ्सा टूथ ब्रशिंग की, कॉन्टेक्ट नंबर याद करवाने की, क्लोथिंग, हेयर ब्रशिंग, शू लेसिंग, यस 1 2 3 4 5 6 5, अभी तक आपने 5 लिखे हैं। आपने 3 मोर स्किल्स फाइंड आउट करने हैं, और कौन से 3 और ऐसे स्किल्स हो सकते हैं जो आप बच्चे को सिखा सकती हैं। टोटल 8 स्किल्स आपने फाइंड आउट करके उसका टास्क एनालिसिस, उसका आपने मुझे जो है आपने जो है सिंगल अपॉर्चुनिटी मेथड यूज किया है, या आपने जो है मल्टीपल अपॉर्चुनिटी मेथड यूज किया। मैं आपने जो भी सारा प्रोसीजर होगा वो आपने लिख के मुझे, और साथ ही प्रोसीजर्स भी लिखने हैं कि जो आपने ट्रेनिंग प्रोसीजर्स करवाए हैं वो कैसे करवाए हैं, हर चीज आपने बीच में लिखनी है, ठीक है। सो आपने वेंसडे तक मुझे भेजनी है 8 के 8 स्किल्स की। गॉट इट? यस, ओके, गुड, ठीक है। सबीला, आर यू देयर? यस सर। Are you clear about the chaining procedures, or you have the question? सर ट्रेनिंग प्रोसीजर मैं अभी अभी आई हूँ, लाइक मैंने कुछ भी नहीं किया। आप अभी ज्वाइन किया आपने, अच्छा ठीक है। ठीक है, मैं आपको वॉइस मैसेज करूंगा, ठीक है। उसमें मैं आपको चीजें एक्सप्लेन करूंगा, आपने वो फिर टास्क जो भी आपको मैं दूं आपने वो कंप्लीट करके मुझे भेजना है, ठीक है। एंड आई विल आल्सो शेयर द रिकॉर्डिंग ऑफ प्रीवियस क्लासेस। और आपके पास 3 डेज हैं, मंडे ट्यूसडे वेंसडे। इन 3 डेज में आपने प्रीवियस 2 क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स देखनी है। इतनी ज्यादा रिकॉर्डिंग्स नहीं है, यू कैन डू इट, आई जस्ट अपलोडेड दोज रिकॉर्डिंग्स
on the YouTube. You can just open the link and watch all the recordings. And on Wednesday, you submit your assignment. ओके आज की Okay, क्लास में sir. जो असाइनमेंट्स मैं दे रहा हूँ वो आपने सबमिट करनी है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास हम जो है The उसमें, video form. हाँ वीडियो फॉर्म में, ये असाइनमेंट जो है वो वीडियो फॉर्म में है। इससे प्रीवियस एक असाइनमेंट थी, वो क्लास जब आप रिकॉर्डिंग देखेंगी तो उसमें आपको मिल जाएगी क्या असाइनमेंट थी। ठीक है, सो वो भी आपने मुझे करके देनी है असाइनमेंट। ठीक है, वो सिंपल सी थी असाइनमेंट, वो इतनी डिफिकल्ट नहीं है, उसमें जस्ट एबीसी, एंटीसीडेंट बिहेवियर्स और कॉन्सिक्वेंसेस को फाइंड आउट करना है। Okay, okay, sir. Got it. ठीक है, सो दीज आर वेरी स्मॉल एंड इजी टू अचीव असाइनमेंट्स हैं जो आपने वन बाय वन करनी है इंशाल्लाह। ये भी सिर्फ दो असाइनमेंट्स मैंने दिए हैं स्टूडेंट्स को करने के लिए। ठीक है, अभी आप सब लोगों की एक क्लास एक्टिविटी है। आप लोगों ने सब ने वो क्लास एक्टिविटी करनी है। आपने मुझे शू लेसिंग का, सब स्टूडेंट्स शू लेसिंग का टास्क एनालिसिस बना के भेजेंगे, और टोटल 10 स्टेप्स होने चाहिए शू लेसिंग को करने के। और साथ आपने बच्चे की डिसेबिलिटी, जो 4 पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बताए हैं लेक्चर के दौरान, कि आपने एज, बच्चे की डिसेबिलिटी लेवल, उसका प्रीवियस एक्सपीरियंस, और उसकी जो कॉग्निटिव लेवल है वो आपने साथ मेंशन करने हैं कैसा है। और फिर उसके साथ आपने स्टेप्स बनाने, 10 बना लें, 8 बना लें, 15 बना लें, इट्स टोटली अप टू यू। ठीक है, इन चारों पॉइंट्स का आपने ख्याल रखना है, एज, स्किल लेवल, डिसेबिलिटी एंड प्रायर एक्सपीरियंस। You have the 10 minutes to build their task analysis and send it in the WhatsApp group within 10 minutes. Got it? सो सर इसमें स्टेप्स हैं और इसमें आपको मेंशन करना है कि डिसेबिलिटी एज वो